Hello beta, good evening everyone. In today's lecture, we are going to go ahead and take all formulas related to statistics. Right beta? ठीक है बच्चे, let's start. First, I'm going to start with the class width. बहुत basic चीज है, but class में exam में कभी कभी आ जाती है. So the class width can be written as higher value, highest value, minus lowest value, divided by the number classes, right? Then you have the midpoint, class midpoint. Beta, midpoint can be written as upper limit plus lower limit divided by 2. Then the next formula that you have is sample mean. Sample mean is x bar and it can be written as summation x by n, right? Then you have weighted mean. बेटा weighted mean के लिए हम क्या करते हैं ना कि हर x observation को जो भी उसका weight given होता है उससे multiply कर देते हैं. So we will get summation wi xi divided by summation wi. This will be your weighted mean. Then you have mean for frequency table. अगर आपको x's दिए हुए हैं और उनके corresponding उनकी frequencies दी हुई हैं, so the mean for frequency table can be written as summation x f upon summation f. आप हर x को उसकी frequency से multiply करोगे, you will get x into f here. You will add this up, right? You will get this amount here and divided by the sum of the frequencies, right? But then you have the formula of range. Range can be written as highest value minus the lowest value. Then you have the formula for standard deviation of the sample, and it can be written as summation xi minus x bar whole square divided by n minus 1. बेटा ये sample का variance होगा और अगर sample का standard deviation निकालना है तो इसका under root कर देना. But because this is sample, तो ध्यान से देखो, I am dividing by n minus 1. ठीक है, ये sample का है. And if instead of sample you are given the population, अगर आपको population given हो, हाँ बच्चे, तो what will happen? Then you will divide with n. तो अगर population का variance निकालना है, you will get summation xi minus x bar whole square divided by n. और population का अगर standard deviation निकालना है, summation xi minus x bar whole square divided by n under root. Right, beta? Achha. Then sometimes they will ask you what is the limit for an unusual data. ऐसे करके बोल देंगे. Find the limits for an unusual data set. तो अगर ऐसा कुछ exam में आ जाए that find limit for an unusual data set, so in that case beta limit will be the below limit is written as mean minus 2 standard deviation and the above limit is written as mean plus 2 standard deviation. ठीक है, उसके बाद कुछ empirical rules हैं जो हमें याद रखने हैं. Empirical rules. ओके बेटा, तो हमारे empirical rules क्या कहते हैं बच्चे? It says that 68% of the data it is within one standard deviation. तो sigma minus mu minus sigma to mu plus sigma. 68% of the data is within one standard deviation. Beta 95% of the data set it is within 2 standard deviations. So mu minus 2 sigma to mu plus 2 sigma. And 99.7% of the data is within 3 standard deviations. So mu minus 3 sigma to mu plus 3 sigma. ठीक है बेटा. Then we have the formula of coefficient of variation. ये हो जाता है standard deviation by mean into 100. ठीक है, ये है sample का coefficient of variation.
इफ यू आर गिवन द पॉपुलेशन तो पॉपुलेशन का सिग्मा लगा देना, सिग्मा बाय मीन इनटू, ठीक है बेटा। देन द नेक्स्ट थिंग दैट यू शुड नो इज कॉल्ड द जेड स्कोर। अब जेड स्कोर कैसे निकलता है, बहुत सिंपल है। अगर मीन का हम जेड स्कोर निकाल रहे हैं तो x माइनस एक्स बार बाय स्टैंडर्ड डिविएशन। अच्छा फिर से सेम बात है, अगर जेड स्कोर हम सैंपल का निकाल रहे हैं, राइट, तो यहाँ पे ना s होगा एंड हियर यू विल हैव x बार। बट इफ यू आर फाइंडिंग द जेड स्कोर ऑफ द पॉपुलेशन, अगर हम जेड स्कोर पॉपुलेशन का निकाल रहे हैं, देन बेटा यू विल हैव x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, ठीक है। देन द नेक्स्ट फॉर्मूला दैट वी नीड टू रिमेंबर बच्चे, दैट इज ऑफ इंटर क्वार्टाइल रेंज। तो इंटर क्वार्टाइल रेंज हो जाएगी बच्चा Q3 माइनस Q1। इंटर क्वार्टाइल रेंज हो जाएगी Q3 माइनस Q1। अच्छा सपोज दे आस्क यू फाइंड द मॉडिफाइड बॉक्स प्लॉट आउटलायर्स, ऐसा कुछ बोल देते हैं, फाइंड मॉडिफाइड बॉक्स प्लॉट आउटलायर्स। तो दो लिमिट्स निकलती हैं इसमें, वन वी हैव द लोअर लिमिट एंड वन वी हैव द अपर लिमिट। द लोअर लिमिट ऑफ मॉडिफाइड बॉक्स प्लॉट आउटलायर is Q1 minus 1.5 IQR इंटर क्वार्टाइल रेंज, और अपर लिमिट हो जाती है Q3 प्लस 1.5 इंटू IQR इंटर क्वार्टाइल रेंज, ठीक है। उसके बाद बच्चे प्रोबेबिलिटी की तरफ बढ़ते हैं थोड़ा सा। सो इफ यू आर गिवन एनी इवेंट ए, तो ए कॉम्प्लीमेंट हो जाता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। सपोज आपको बोल दिया जाए दैट ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, राइट, यू आर गिवन दैट ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा बच्चे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक है बेटा। सपोज आपको बोल देते हैं फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ऐसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए हो जाएगा बच्चे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अच्छा सपोज आपको यहां पे बोल दें दैट ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, तो ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा ए इंटू बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो बच्चे दिस विल कैंसिल आउट ईच अदर एंड आपको मिल जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। सो यू विल गेट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी as probability of A only, समझे। अच्छा देन वी हैव प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B, और ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस B माइनस A इंटरसेक्शन B, ठीक है। इसमें भी देयर कैन बी डिफरेंट थिंग्स। इफ दे आस्क यू दैट, इफ दे टेल यू दैट A एंड B आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, मतलब ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है, दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, तो ये 0 हो जाएगा। सो बच्चे यू विल गेट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस 0, दैट मीन्स यू विल गेट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, है ना। इफ दे टेल यू ए एंड बी आर इवन सच दैट दे आर इंडिपेंडेंट, तो यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी की जगह ए इंटू बी लगा देना, है ना, दैट इज व्हाट कैन हैपन। अच्छा देन यू हैव, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, यू हैव द फॉर्मूला ऑफ बेस थ्योरम। अगर आपको बोल दिया जाए फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन, जैसे फॉर एग्जांपल आपको कुछ ऐसा दिया हुआ है दैट इमेजिन दैट देयर आर 3 boxes in which there are red and blue balls, and the event is that a red ball is picked. What is the probability it is from box 1, right? Given that a red ball is picked, what is the probability it is from box 1? तो अगर ऐसा कुछ दिया हुआ है तो it will be probability A given B1 into probability B1 upon probability A given B1 into probability B1 plus probability A given B2 into probability B2 plus probability A given B3 into probability B3.
तो इफ यू लुक एट द डिनोमिनेटर ना बेटा, डिनोमिनेटर विल रिप्रेजेंट द टोटल प्रोबेबिलिटी, राइट बच्चे? एंड इफ यू लुक एट द न्यूमरेटर, इट इज योर फेवरेबल प्रोबेबिलिटी। और जब भी हमें ये न्यूमरेटर निकालना होगा, वी विल रेसिप्रोकेट दिस। देखो इसको हमने उल्टा किया है यहाँ पे, इनटू द प्रोबेबिलिटी ऑफ टेकिंग इट फ्रॉम द बॉक्स 1। अच्छा, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा अपना डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की। तो अगर हम मीन की बात करें बच्चे, मीन विल बी समेशन एक्स एंड ईच एक्स शुड बी मल्टीप्लाइड विद द प्रोबेबिलिटी। तो एक्स एक रैंडम वेरिएबल है। सपोज आपको दिया होगा एक्स टेक्स द वैल्यू 0, 1 एंड 2 एंड यू विल बी गिवन द प्रोबेबिलिटी 1/3, 1/3, 1/3। तो यू विल बी आस्क्ड मीन। तो मीन क्या होगा? यू नीड टू फाइंड एक्स इंटू पी एक्स, वो यहां पे निकल जाएगा बच्चे, राइट? And then you will add these x px together and you will get the value of the mean. Similarly, अगर आपको variance बोल दिया जाएगा निकालने के लिए, then you will do summation x square px minus summation x into px whole square. Summation x square px minus summation x into px whole square. बच्चे इसको हम लिख सकते हैं summation x square into px minus, देखो ध्यान से, x into px is nothing but the value of the mean. Summation x into px तो mean ही था, so this can be written as minus mean whole square. और अगर हम इसको देखें तो हमने x square को probability से multiply किया है ना, तो this is expected value of x square minus expected value of x whole square, right बेटा? तो ये हमारा हो जाता है discrete probability distribution. अच्छा, इसी में हम बात करेंगे अब binomial की। So if you have binomial distribution, तो binomial distribution का जो mean हो जाता है, it is n into p, और binomial distribution का जो variance हो जाता है, it is n into p into q, और जो standard deviation हो जाता है, it is under root of n into p into q, right? बेटा p is the probability of success, q is the probability of failure. P is success and Q is failure. हाँ, तो अगर हमें इस केस में किसी का प्रोबेबिलिटी निकालना होगा तो इट विल बी NCR P to the power R Q to the power n minus R. एग्जाम्पल ले लेते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल यू आर गिवन कि एक फैमिली है जिसमें देयर आर 5 चिल्ड्रेन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 3 विल बी बॉयज, ऐसा कुछ दिया हुआ है। सो आउट ऑफ 5 यू नीड 3 बॉयज। P को ले लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ बॉय, जैसे ये दिया होगा हाफ, एंड Q हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ गर्ल। तो Q इज 1 माइनस P, तो 1 माइनस हाफ, तो बच्चे ये भी हाफ हो जाएगा। तो दिस विल बी हाफ टू द पावर 3, R 3 है, एंड हाफ टू द पावर 5 माइनस 3 माने 2, राइट बेटा? क्लियर? अच्छा, नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। तो अगर हम पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, तो फॉर पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन वी नो दैट द फॉर्मूला इज e to the power minus lambda, lambda to the power r by r factorial, where lambda is nothing but the mean. Lambda is nothing but the mean. तो बेटा lambda हमारा mean है, और पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का ये प्रॉपर्टी है दैट द मीन एंड वेरिएंस आर इक्वल टू ईच अदर, तो दोनों ही लैम्डा हो जाएंगे। तो कभी कभी ना एग्जाम में दे विल टेल यू दैट consider Poisson distribution whose average time taken is 5 minutes. Find variance. हाँ बच्चे, और remember that variance and mean are same only. तो variance भी 5 ही होगा। अच्छा, what will be standard deviation फिर? Standard deviation is under root of variance, तो root 5 हो जाएगा, right? Okay बेटा, फिर हम आगे आते हैं। Let's talk about normal distribution. बच्चे व्हेन आई टॉक अबाउट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, तो थोड़ा सा समझना है हमें। एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमें स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल की जरूरत पड़ती है। हाउ कैन आई कन्वर्ट एनीथिंग इनटू स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल? आप उसमें से मीन को सब्ट्रैक्ट कर दो और स्टैंडर्ड डिविएशन से डिवाइड कर दो। कोई भी वेरिएबल जब स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल बनता है, whenever any variable becomes a standard normal variable, then in that case
the mean of a standard normal variable is 0 and the variance of a standard normal variable is 1. ये इसका properties हो जाता है, right? Sometimes in exam, they ask you to find out the standard error. If they ask you to find standard error, then standard error will be sigma by root n, right? Suppose beta they ask you to find out the z score in this case, right? So the z score will be x bar. किसका निकाल रहे हैं z score बेटा? मीन का. Don't get confused. जो हमने z score ऊपर निकाला था, the z score we had found earlier, this was the z square of x. Now I am finding the z square of mean. Hypothesis testing में z square mean का निकाला जाता है. So when I will find the z square of mean, it will be x bar minus mu divided by standard error. So it will be x bar minus mu upon sigma by root n, right? Upon sigma by root n. ठीक है बच्चे, next let's go forward now, further now. तो अब हमारी बात कर सकते हैं हम about the proportions. Proportions की थोड़ी बात करते हैं. So if I talk about proportions, अच्छा, before I talk about proportions ना, you must talk about इसका confidence interval also, right? So अगर हम इसी z score का confidence interval निकालेंगे, we can find the confidence interval of the mean, and mean का confidence interval हो जाएगा x bar minus e and x bar plus e. X bar minus e and x bar plus e. But here this e, this is z evaluated at alpha by 2 into sigma by root n. एक example के तौर पे अगर मैं आपको बताऊं, so you are doing a two-tail test, right? And you are given that z at 95% at two-tail value is 1.96. आपको mean भी दिया हुआ है, you're given mean is 10. And you are given that standard deviation is 1 and sample size is 100. ऐसा कुछ दिया हुआ है. So what will be E beta? E will be 1.96 into 1 divided by root 100. So 1.96 divided by 10. So 0.196. ठीक है. Now you will just plug the value here. तो यहाँ पे आपके पास mean दिया हुआ है 10 minus 0.196 mu 10 plus 0.196. And by this, you will find the confidence interval of mu. आपको mu का confidence interval मिल जाएगा. Similarly, if I talk about the confidence interval of proportions, अगर मैं proportions की confidence interval की बात करूं, then that is beta p hat minus e less than p hat plus e. P hat sample की success probability है. P population success probability, right? And here we can go ahead and write E as P into 1 minus P by n under root into Z alpha by 2. Remember, beta in this case, when I am calculating E, जब मैंने ये E calculate किया है, it is calculated using the value of the population proportion. बहुत ध्यान से देखो. I am calculating E using the value of the population proportion, right? Okay, यहाँ पर just one thing here, beta. If you notice, this is standard error. तो इसको ना हम लिख सकते हैं Z alpha by 2 into standard error. We can also go ahead and write it like this. अच्छा, here I have some conditions. You can go ahead and find this sample this confidence interval of the sample only if you follow the rule that your n into p should be greater than 5. अगर ये rule satisfy हो रहा है, if this rule is getting satisfied that n into p is greater than 5, only then you can go ahead and find the sample proportion. Am I clear with it? Okay, बच्चे. Then next let's talk about the chi-square, right? मतलब अगर I want to find the confidence interval for the variance. So the confidence interval for variance can be written between n minus 1 sample variance divided by chi-square and
n minus 1 sample variance divided by chi-square. Here, the degree of freedom that we are using is n minus 1, right? And यहाँ पे जो हमारा ये chi-square है बच्चे, this chi-square basically goes ahead and it tells you the upper and the lower limits. Basically आपको बता देता है कि upper और lower limit chi-square की क्या रहेगी. Based on that, we go ahead and we find these values. Huh. Okay. Then the next thing that I can think of is, so basically one more thing here. So sometimes in exam, they will ask you what is confidence interval. तो अगर आप ध्यान से देखो, in finding the confidence interval, we have this value. इसको बोला जाता है point estimate. Point estimate मतलब it is giving me one value from the sample which is giving information about the population. Population का proportion value क्या होगा वो मुझे sample के proportion से पता चल रहा है. Population का mean कितना होगा वो मुझे sample के mean से पता चल रहा है. So this is my point estimate, right? And this is the error that we have. So confidence interval can be majorly written as point interval plus minus the error. Point interval plus minus the error, इसको हम confidence interval बोल सकते हैं. Then let me think if something is left. Let's talk about the two variable models also in hypothesis testing. So when we go ahead and we do a two sample test, right? So in two sample test, फिर से यही सब होगा कि you want to test the two sample mean values, or you want to go ahead and you want to test the proportions of two sample. तो अगर two sample का mean value हमें test करना है बच्चे, so in that case there are different cases, बहुत सारे cases आ जाते हैं उसमें, and the first case that can be there will be where you have two samples which are independently chosen, right? So case 1 ले लेते हैं इसमें, two independent samples. So if you have two samples that are independently chosen, तो उस केस में हमारा हो जाएगा x1 बार sample first mean minus x2 बार sample of the second mean minus error less than mu1 minus mu2 less than x1 bar minus x2 bar plus the error term. And this error term, जब हम इसको calculate करते हैं, this will be z alpha by 2 into sigma 1 square by n1 plus sigma 2 square by n2. Right, beta? इसी को if I have to convert this in terms of hypothesis testing, तो मेरा hypothesis testing में जब हम ये z निकालते हैं, that z will become x1 bar minus x2 bar minus mu1 minus mu2 upon sigma 1 square by n1 plus sigma 2 square by n2. Right? बेटा, suppose exam में ऐसा बोल देते हैं वो, that assume that the sigmas are unknown. आपको sample के तो variance पता है, but population variance is unknown. The sigmas are unknown. So if the sigmas are unknown, then in that case आपका जो error होगा ना, this E that you have calculated here, this is going to be at T. So you will use T alpha by 2. And then you will write S1 square by N1 plus S2 square by N2 under root. S1 square by N1 plus S2 square by N2 under root. Am I clear with it, beta? अच्छा, S1 square in itself, ये sample का mean है. Sample का variance है ना? So when you will be calculating this sample variance, so it will be summation xi minus x bar whole square divided by N1 minus 1. Summation xi minus x bar whole square divided by n1, n2 minus 1. These are sample variances. Population मुझे पता नहीं है. Population variance is unknown. So I am going to use the sample variance. And whenever you will be using the sample variance, you need to remember that we will be using the t value. हम हमेशा t को use करेंगे, right?
Okay, beta. Then the next thing that can be asked in exam can be the case where you have matched pair, right? So if you have matched pair, so in case of matched pair, how do we find out the value of the confidence interval? The confidence interval can be written as D. I will explain what D is. D bar minus E less than mu mu2 कर देते हैं इसे less than D bar plus E. This is how you can go ahead and you can find the confidence interval in this case, right? अच्छा, अब थोड़ा सा समझो what is D bar? इस D bar को हम ये क्या है D bar जिसकी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे? So D bar क्योंकि हम एक डिपेंडेंट सैंपल की बात कर रहे हैं because we are talking about a matched pair, right? So in this case, the value that I'm going to use will be called as D bar. In this case, what we will do is, we will say that error term is the same only. It is T alpha by 2 into S of D divided by root N, right? और जब हम यहाँ पे T test करेंगे, so T test will be D bar minus mu. यहाँ पे D bar कर देते हैं. It will be easier for you to remember. D bar upon you have SD divided by root N, right? So this will be the case when you have matched sample, right? Now, what is D bar? So D is nothing but it is the difference of the means. तो standard deviation भी हम difference का निकालते हैं. Because you are picking up the same sample. It's like saying कि मेरे पास एक sample था and I am checking that sample before and after treatment. जैसे for example एक BP की medicine से पहले we are measuring the BP और फिर BP का medicine देने के बाद we are measuring the BP. So I am talking about the same sample ना. तो इस case में what we will do बेटा, I will have patient 1, 2, 3, 4, 5. यहाँ पे उनका before BP होगा, before medicine BP का value होगा, after medicine BP का value होगा, then you will find the difference. उसी difference का mean निकालोगे, इसी data का standard deviation निकालोगे, and then mu का value 0 पे लेंगे. That assume there is no difference in the BP before and after medicine. Right, beta? So ऐसे करके you will be able to get the T value, right? Then the next thing that will happen is where to use F test. So F test will be used if you are doing two sample variance. So in two sample variance, you will be going and using the F test. Now in this case, the formula is very simple, beta. S1 square upon S2 square, right? Into 1 by F value, divided by F value less than sigma 1 square by sigma 2 square less than S1 square by S2 square into 1 by F value. बच्चे यहाँ पे मैं लिख रही हूँ R, that means right, और यहाँ पे मैं लिख रही हूँ L, that means left. So एक बारी हम अपना R F का right hand value लेते हैं, एक बारी F का left hand value लेते हैं, and we plug in those values and we get the confidence interval. बेटा just remember, जब भी हम F का value निकालते हैं, we need the degrees of freedom of numerator and denominator. The degree of freedom of numerator is n1 minus 1 and denominator will be n2 minus 1. Always remember that whenever you find F values, hypothesis testing में, remember you will do S1 square by S2 square, where S1 square will be more than equal to S2 square. इसके बारे में we have discussed this in classes, that whenever you will go ahead and do the F test हमेशा ऐसे करना है that the higher value is in the numerator in hypothesis testing. ठीक है बच्चे, now let's talk about the regression part. So in regression, the first thing that we should be knowing is the value of the correlation coefficient. And this can be written as n summation xy minus summation x summation y upon n summation x square minus
summation x whole square under root into n summation y square minus summation y whole square. Right? Acha, there is another way to find this out. You can write this as covariance between xy upon standard deviation of x into standard deviation of y. But now, try to understand that there is something called as, अच्छा जो ऊपर लिखा हमने वो तो linear correlation coefficient. This is linear correlation coefficient. जो हम अब लिखने लगे हैं, that is coefficient of determination. The coefficient of determination is nothing but explained variation divided by the total variation. Explained variation divided by the total variation. Sometimes in exam, they may ask you, find standard error of estimation. If they ask you, find standard error of estimation, please remember that the standard error of estimation is summation yi, actual value of y, minus the predicted value of y. Y nahi karte, y likh dete. Actual value of y minus predicted value of y whole square divided by n minus 2 under root. This is the standard error of estimate, right? So they may ask you, find the slope coefficient in regression. Slope coefficient. So slope coefficient hai beta 2, and that is summation xi yi by summation xi square, where xi is deviation from mean, yi is deviation from mean, right? Then beta, at last you may be asked to go ahead and find out the t value. हाँ, तो इस पे भी हम betas पे भी hypothesis testing कर सकते हैं. तो t will be beta 2 hat minus 0 on standard error of beta 2. अच्छा, यहीं पे just remember that beta 1 hat मतलब जो intercept coefficient है, मेरा regression ऐसे चल रहा है, yi is equal to beta 1 hat plus beta 2 hat xi. तो जो beta 1 hat होगा ना, that will be y bar minus beta 2 hat x. Y bar minus beta 2 hat x bar. Right, beta? Then I think we have covered it all. Not that I can think of anything. So then in that case, one more thing that can happen is, what if they give you chi-square test? So chi-square test का formula हो जाता है summation observed value minus expected value whole square divided by expected value. आप पहले ये term निकालते हो, this term, and after finding this term, you just sum it over. That gives you the chi-square. So expected value को निकालने का formula अपने आप में होता है row total into column total divided by the sample size. Achha, suppose they ask you in chi-square, find the degree of freedom, right? So it will be row minus 1 into column minus 1 multiplied. And they ask you, find the goodness of it. So goodness of it will be number of categories minus 1. Number of categories minus 1. Okay, beta, that is it that I can think about, and I hope that this is useful to you and you will be, using this for your final exam preparation. Okay, bache, thank you.